Good morning, my dear students. Today I'll let you know your doubts, whatever the doubts you had. आप लोगों का बहुत सा doubts निकला हुआ है, तो वो doubts को solve करते हैं. तो सबसे पहले कौन सी किताब से किया जा रहा है डाउट सॉल्व, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ. तो चैप्टर का जो नाम है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है, एक्सरसाइज 20.2 और बुक का नाम है बी ए मैथ स्टार. इट्स एन ICSE from ICSE syllabus. So one of the question is given here. A cylinder tube opens at both end. एक सिलेंडर का जो ट्यूब है, आपको समझना बहुत जरूरी होता है कि एक सिलेंडर का जो ट्यूब है वो दोनों तरफ से ओपन किया हुआ है. The internal diameter of the tube is 10.4 centimeter. Let me underline this here. And the length is 25 centimeter. Again, let me circle over this. The thickness of the metal is 8 millimeter. Calculate the volume of the metal. तो अधिकतर स्टूडेंट्स तो एग्जाम में तो सब तो कर लेते हैं, लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में. तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि इस जब भी आपका कोई मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो, कोई भी क्लास का हो या 11 का हो या 12 का हो या कोई भी क्लास का भी हो, तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए क्वेश्चन को, फिर उसको डायग्राम में कीजिए. तो फर्स्ट स्टेप जो है आपका डायग्राम बनता है, तो वो आपको मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ. तो डायग्राम है क्या, एक सिलेंडर है, ऐसा सिलेंडर बनता है जो हॉलो है, दोनों तरफ से खुला हुआ है. और क्या बता रहा है, द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज 10.4 सेंटीमीटर. ये जो इंटरनल डायमीटर है ये है 10.4, यानी कि इसका एक एक्सटर्नल डायमीटर भी बनता है. फिर तो इंटरनल डायमीटर बनता है 10.4 लिखा हुआ है, और लेंथ 25 सेंटीमीटर, यहां से ये 25 सेंटीमीटर है, और कहा गया है इसका मेटल का जो थिकनेस है वो है करीबन 8 मिलीमीटर, यानी कि ये जो थिकनेस है ये 8 मिलीमीटर है. तो आउटर डायमीटर फिर कितना होगा, 8 + 8 16. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ. अब जो है सेकंड स्टेप, तो पहला स्टेप का आपका तो डायग्राम बनता है, सेकंड स्टेप में बनता है कि इंटरनल डायमीटर दिया हुआ था 10.4 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस फिर बन जाता है 10.4 डिवाइडेड बाय 2, इट बिकम्स 5.2 सेंटीमीटर. फिर थिकनेस क्वेश्चन में दिया गया था कि थिकनेस दिया हुआ है 8 मिलीमीटर, इसको आप चेंज कीजिए सेंटीमीटर में, इट बिकम्स 0.8 सेंटीमीटर. So external radius, that means from here to here, it is 5.2. 5.2 was from here to here, and this becomes 0.8. So external radius becomes 6 centimeter. Now let the internal radius be R1, external radius be R2, and rest inside it is a hollow. Now we know that next you have to write down the formula used. Volume of cylinder. We know that the volume of a cylinder is pi R square h. Here h means height, but since it was a hollow cylinder, so we are writing V is equals to pi becomes common, h becomes common, then it becomes external radius. The external radius was 6, that is R2 square minus R1 square, cubic unit. So pi means, write down here 22/7. Height was given 25 centimeter. R2 it was 6 whole square, that is 36. R1 that is it is 5.2 whole square. So solving this we get V equals to 22/7 into 25 into 36 minus 5.2 whole square is 27.04 cubic centimeter, which equals to 25 2s are 50, 0, 25 2s are 50, 550 by 7 into 36 minus 27.04, it becomes 6
9, 8. Now 7 gets cancelled off with this. 7 1 is 7, 7 2 is 14, 7 8 is 56. So you have to multiply 550 into 1.28 cubic centimeter, which is equals to 704 centimeter cube. This is one more question from the same book. So here, what length of a solid cylinder 2 centimeter in diameter. तो एक सिलेंडर है 2 सेंटीमीटर का है जो एक सॉलिड है, अंदर से कोई हॉलो नहीं है, मस्ट बी टेकन टू रिकास्ट, मतलब उसको फिर से उसका वॉल्यूम निकालने के बाद उसको फिर से रिकास्ट करना है, उसी मेटल से रिकास्ट करना है इनटू ए हॉलो सिलेंडर. तो जो रिकास्ट करते हैं तो वो एक हॉलो सिलेंडर बना रहा है of external diameter 20 centimeter and 0.2 centimeter thick and 15 centimeter long. So first, the very first step, as I said you again and again, I am saying you must draw the diagram first. So let us have what length of solid cylinder 2 centimeter. So suppose let this be a solid cylinder. Here 2 centimeter in diameter, 2 centimeter in diameter they say. So from here it is 2 centimeter in diameter. So from this we don't know the height, we require the height of this cylinder. So from this again a hollow cylinder has been made, must be so that the external diameter, so this is internal diameter and this is the external diameter. So the external diameter here it is 20 centimeter given and 0.25 centimeter is the thickness. So this thickness it is 0.25. So what we can conclude here, from here the external radius is equals to 20 by 2 is equals to 10 centimeter and the internal radius will be 10 minus this much, that is 10 minus 2.5, 0.25, that is internal radius is equals to 9.75 centimeter as the thickness was given 0.25. So we had two results of internal and external radius. Now we have to find out what is the volume. So the length of this cylinder is how much they said? They said 15 centimeter. So the volume of this must be equals to the volume of this cylinder, but the volume of this cylinder already we know that formula here, V is equals to pi into length, that is 15 into external radius square minus internal radius square. So finally what we can write, the volume of this is V equals to pi into H into, here the external diameter is given 2 centimeter, so the radius will be 1 centimeter. So this volume must be equals to the volume of this. So according to question, we have the volume of the solid cylinder is this and volume of the hollow cylinder which has been recasted is this. So if you solve out this, we get, for the next step we get a plus b into a minus b, then finding out we get the answer over here, and if you multiply this two we get this, then 15 into this will be 74.0625, and since the left hand side we have pi into h, so pi gets cancelled, so h equals to this centimeter.